आई वेलकम यू ऑल, जितने हमारे एस्टीम्ड मेंबर्स हैं और ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड हमारी टीम आई हुई है सीएमओ ऑफिस से डॉक्टर्स भी आए हुए हैं और पूरे कार्यकर्ता जो आए हुए हैं जो अपना इस काम में लगे हुए हैं बड़े अच्छे से, और हमारे सहभागी हिंद रेडियो 90.4 एफएम से भी एक टीम आई हुई है पूरी। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और इससे पहले कि हम अपना एकेडमिक कार्यक्रम शुरू करें, आई इनवाइट डॉक्टर सीमा वार्ष्णे एंड डॉक्टर प्रीति टू काइंडली कम अप फॉर IMA प्रेयर एंड वंदे मातरम। I request everyone to rise, please. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वं कामे राज्यं, न स्वर्ग न पुनर्भवम्, कामे दुःखताप्तानां प्राणिनाम आतिनाशनम। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सुश्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं, पुलकुसुमित द्रुमदलशोभनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट्स। एक बहुत खुशी की बात है कि ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ये पूरा यूपी स्टेट और पूरा ऑनलाइन भी कार्यक्रम देखा जा रहा है ये, और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और हमारे भी चीफ गेस्ट डॉक्टर भावतो शंकर भी आने ही वाले हैं, ऑन द वे हैं। और तब तक हम अपना कार्यक्रम शुरू करें, मैं FM रेडियो हिंद रेडियो 90.4 FM के निदेशक श्री सामंत शेखरी जी को बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर अरुण गुप्ता जी, डॉक्टर पोद्दार सर, आप प्लीज़ कम, आप यहाँ पे आइए और सर को फेलिसिटेट कर दीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्लीज़ टेक अ सीट सर। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सीनियर फिजिशियन पल्मोनोलॉजिस्ट गाज़ियाबाद के जाने माने डॉक्टर आशीष अग्रवाल, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और मॉडरेटर भी हैं। वो अपनी टीम, अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं, उन सबको आमंत्रित करेंगे और अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर आशीष अग्रवाल। Thank you very much, Dr. Sandeep. So, I welcome you again on behalf of IMA Ghaziabad. मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। नारी शक्ति को हमेशा प्रणाम। और मीडिया से भी लोग आए हुए हैं। हिंट रेडियो के मैं बहुत अच्छे वो देख रहा था, पोस्टर्स बहुत अच्छी तरह बनाया है। CMO ऑफिस से जितने भी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, और NGO से भी आए हुए हैं। एक NGO भी ट्यूबरक्लोसिस के लिए काम करता है, वो लोग भी यहाँ पे हैं, और अभी बाकी लोग सब ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? टुडे इज़ अ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो होता है दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन एवरी 24th ऑफ मार्च एवरी ईयर। हर साल 24th ऑफ मार्च की डेट फिक्स है कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। वाई ऑन 24th ऑफ मार्च? इसका रीज़न ये है कि 1982 में
रॉबर्ट कॉक्स ने, जो इसके जो साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, उन्होंने 24 मार्च को ही ट्यूबरकल बेसिलाई डिस्कवर किया था. दैट्स वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 24 मार्च, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे. As you all know, this year the theme of the tuberculosis is Yes We Can End TB. ये इस बार का थीम है एंड बहुत अच्छा थीम दिया है. वाई वी कैन एंड टीबी. वी का मतलब है माई सेल्फ एंड यू. हम सभी लोग मिलके वी कैन एंड द ट्यूबरक्लोसिस बाई 2025. जो WHO का जो टारगेट है दैट इज़ बाई 2030, बट इंडिया का जो टारगेट है दैट इज़ बाई 2025. वी आर वर्किंग ऑन दैट. एंड अभी मुझे पता चला कि 4 स्टेट्स में ट्यूबरक्लोसिस का एलिमिनेशन हो भी गया है. दैट इज़ अ बिग थिंग. बहुत बड़ी बात है कि 4 स्टेट्स से ट्यूबरक्लोसिस अब ख़त्म हो गई है इंडिया में और हम लोग उसके पास ही चल रहे हैं. सो माई मेन एम, व्हाट इज़ माई मेन एम ऑफ द टुडे. मैं आपको आज, बिकॉज दिस गैदरिंग इज़ बेसिकली फॉर द डॉक्टर्स, for the workers, for the media also. So today I will update you regarding the tuberculosis, how to manage a case of tuberculosis, what are the investigations, how to diagnose a case of tuberculosis, कौन सी इन्वेस्टिगेशन, कौन सी जांच कहाँ करानी है, ट्यूबरक्लोसिस में किस तरीके से उसको पेशेंट को मैनेज करना है, एंड व्हाट द CMO ऑफिस और द इंडिया इज़ डूइंग रिगार्डिंग द ट्यूबरक्लोसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इनवाइट Dr. Sharad Agrawal, who is a chief guest of the today's program and is a national IMA president. He wants to say something on World Tuberculosis Day. So please welcome Dr. Sharad Agrawal. Connect कर लीजिए Dr. Sharad को. अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट वेट. वो कर रहे हैं उधर से. Secretary Dr. Shishir Jain, our senior leaders, Dr. P.K. Agarwal, Thank you. Dr. Ajay Goyal, and all the beloved dear colleague and my senior and colleague from IMA Ghaziabad. This is a proud privilege that we are sitting here for a noble cause that see that as the government of India has declared that a TB eradication program, TB free India by 2025, and IMA is very particular. As you know that since 1993, IMA is joined hand with the government and Ministry of Health and Welfare, and the work done by the Indian Medical Association is unmatchable. No organization have done so much of work along with the government. First for the RNTCP for establishing the DOT strategy, we all know. We have participated and organized those CMEs under the banner of IMA TB RNTCP program. And under this, believe me, more than 10,000 CMEs we have organized and more than 100 workshops across the country by the IMA organized for RNTCP to sensitize our doctors, number one, for the reporting, how to report, to sensitize them for the DOT strategy, and that is why we are where we wanted to. And that is why the program was eradication up to by 2030. Because of that good work done by the IMA and other organizations and the government, it has been preponed by 2025.
So I'm sure that by these kind of programs, we would be able to sensitize across the state to the members for the reporting, which is very important, and then follow up and dot strategy. Dr. Ashish Agarwal, as he himself is a pulmonologist, so definitely he will come with the deliberation on the pulmonology, and we should also involve the pulmonologists in all the city for having a big symposium. But it is a start, and I know Dr. Ashish Agarwal, he does one or the other kind of program on every TV day for decades. He is doing. His passion for working for the TV eradication. So thank you, Dr. Ashish Agarwal, for your passion. I know your passion, and all the best. IMA UP, IMA Ghaziabad, for organizing this wonderful conference. I have with me our HSG, Dr. Anil Naik sir. So after me, he would like to address the gathering, our guest of honor. Thank you very much, Dr. Sharad. Your words are always motivational for IMA Ghaziabad and all over the country also. Thank you very much, Dr. Sharad. And definitely we can assure you that we will be having a recurrent, repeated programs of this type. And definitely we will achieve our goal of TB elimination by 2025. Now I invite Dr. Nayak also, who is a IMA National Secretary, Honorable Secretary. Please welcome Dr. Nayak. Sir. Dr. Nayak, please. Thank you, sir. Respected Dynamic President Dr. Sharad Agrawal, President and Secretary of IMA UP branch, and all the members who have joined this meeting. Yes, we can do it. Yes, we can end TB. That is the theme of our Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi. That's why members of the IMA have to work with the theme of the government and with the infrastructure of the government. Because previously it was that they have made a government hospital to distribute free medicine to the tuberculosis patients. But now they are giving free medication to the private hospital patient also. And on that, they will give consulting charges and commission to all the medical stores and doctors consulting free. And they will maintain the follow-up and record of all the doctors. And every year, they are felicitating the doctors who have reported maximum number of patients to the TB machineries. So that is a good, because DOT program, direct observation treatment, is a good, and it is a part of the RNTCP, Revised National Tuberculosis Program. So we have to work with our government machineries and to eradicate tuberculosis from India. As we all know, we have eradicated smallpox, we have eradicated polio. Now it is the round of tuberculosis, because in Western world tuberculosis is totally eradicated. But because of this irregularity in medicine, everything, we are not able to control tuberculosis, and every year more than 2,000 to 3,000 patients are dying because of only tuberculosis. It is after COVID, it is the most infectious disease in the India, with patient mortality is concerned. So I wish and I pray to all the members to work for eradication of the program. Yes, our Prime Minister motto is 2030 to eradicate India, tuberculosis from eradicating India. But we think with the help of the IMA and with the help of all the doctors of the modern medicine, particularly because tuberculosis is the only treatment protocol by allopathic modern medicine only. There is no treatment of tuberculosis in homeopathy or in Ayurvedic or in Unani. So it is our duty to eradicate this tuberculosis and save our nation.
Thank you for inviting me and giving me an opportunity to say a few words to all the members. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Nayak. Definitely, you motivate all of us regarding the tuberculosis. And IMA is always doing its best regarding all the programs of the government. They are always partnering the government programs. And regarding the tuberculosis, if you see the data of the country, the notification has increased dramatically because of the private sector involvement. Otherwise, the notification of the cases was very, very less. But in 2018, when the private sector was involved, the notification has increased. The mortality is decreasing because of the private sector involvement. The incidence is also decreasing. The government and the private sector, they are working together, and we can definitely eradicate the disease by 2025. Thank you very much, sir. So now I invite our chairpersons, Dr. V.B. Jindal, who is a senior physician and our state UP IMA state secretary also. Dr. Vani Puri Rawat, who is the president-elect of IMA Ghaziabad, and she is the gynecologist, senior gynecologist in Ghaziabad, and Dr. Rajiv Garg. Dr. Rajiv Garg is senior pediatrician of Ghaziabad. So they are the learned chairpersons of today's program, and they will, I think, they will share their experiences regarding the various modalities of tuberculosis treatment and diagnosis. Please. I invite Dr. D.M. Saxena. Dr. D.M. Saxena is here. दीपाली जी आए हैं? आ रहे हैं? अच्छा, एंड हमारे CMO साहब अभी नहीं आए हैं, जैसे ही वो आएंगे हम उनको बुला लेंगे. So, chairpersons, can I start the session? Yes. Please. तो आप सामने आ जाएं तभी तो आपको दिखेगा. Now, I invite Dr. Sandeep Vashne to welcome our chairpersons and Dr. Seema Vashne. मैंने एक बार दिखा दिया आपका चेहरा कि आप लोग सवाल पूछेंगे तो पता होना चाहिए. डॉक्टर राजीव गर्ग को जरूर दे दीजिए उनको. So thank you, chairpersons and President IMA Ghaziabad. So my topic is tuberculosis management and overview. So today is the World Tuberculosis Day, as I already told, and the theme of the today's day's program is World Tuberculosis Day is We Can End TB. Tuberculosis is the most ignored disease of the society because it is a poor man's disease. Sabhi log diabetes, hypertension and all other problems, they are much more concerned, but nobody is concerned about tuberculosis. That's why the disease is very, very prevalent all over the world, because it is a poor man's disease. No pharma company is interested to make new drugs, to launch new drugs regarding the tuberculosis. Even our society, our NGOs are also not interested in tuberculosis eradication program. And thank you very much for few NGOs who are coming and who are upcoming to make this program successful to eradicate the tuberculosis. But definitely if we, believe me, it is the most deadly disease of the today's society. Much more common than diabetes and hypertension, but nobody is concerned. That is the biggest problem of this disease. If you see the data, 74 million lives saved since 2000 by the global efforts to end TB. That is the good news. But 10.6 million people fell ill with tuberculosis in 2021. And if you see, 1.6 million people died of tuberculosis in 2021. Much, much more than the COVID and diabetes and hypertension. If you see the global burden, tuberculosis is one of the top 10 causes of the death worldwide.
Multi-drug resistant or MDR TB is a public health crisis and a health security threat. The estimate of the WHO is there were 5,58,000 new cases with resistance to rifampicin, and out of this 82% will land into the MDR. Because what is MDR? MDR is basically multi-drug resistant when the patient is resistant to two drugs. The two main drugs are isoniazid and rifampicin, then this is called as a MDR. Welcome, sir. I welcome Dr. Bhavtosh Shankar, Dr. Sandeep Vasne and Dr. Podar. Please welcome Dr. Bhavtosh. Dr. Pradeep Goyal, sir, please come and welcome Dr. Bhavtosh. सर आप आए हो सर, ये बहुत बढ़िया है सर. सर अभी हम लोग ना ट्यूबरक्लोसिस के बारे में ही बात कर रहे हैं. अब 1 घंटे के लिए मैं आपको काफ़ी मतलब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताने वाला हूं और आपको जाने भी नहीं दूंगा सर. So globally the tuberculosis incidence is falling at about 2% per year. That is a good evidence. Ending the TB endemic by 2030, that is by the WHO, but in our country we have to end the epidemic by 2025. That is the goal of anti-TB program. If you see the Indian scenario, India is the highest tuberculosis burden country. In 2018, WHO has given the statistics that the incidence was 2.9 million cases of tuberculosis for India out of the global incidence of 8.7 million cases. पूरे वर्ल्ड में 8.7 million cases हैं, but in India 2.9 million cases. And almost 40% of the Indian population is infected with the tubercle bacilli. 40% of Indian population. That means every third person is infected with the tubercle bacilli. But that doesn't mean that he or she is having a disease. Because it can be the latent infection also, it can be the active disease also. So every third person in our country is having a latent infection which can ultimately develop into the active disease in the coming 2 years of life. And it has been said, and it has been observed in various data also, that 5 to 10% of this 40% latent infection will have to develop the active disease in the next 2 years of life. That is the data. If you see the notification, the government is running a notification program of tuberculosis. In 2021, the notified cases were 19,33,381, whereas it was 16,28,161 in 2020. That means 19% increase of notification in all the programs of tuberculosis. That is a very, very good news, because if we notify the disease early, that means we can treat the disease. If we are not notifying the disease, that means that is the biggest problem. So we have to notify all the cases. This is my humble request to all of you, that we have to notify all the cases to the government, because the government is doing whatever they are getting from our input. So, and the notification, CMO sir, the notification has increased because of the involvement of the private sector. That is the fact also. That's why the government is very, very concerned to involve the private doctors in the notification programs. If you see the all over the world, the data of tuberculosis, India is on the top. That is the biggest problem. India is on the top regarding the tuberculosis, followed by China, Pakistan, Bangladesh, much, much more than Bangladesh and Pakistan. India is a hub of tuberculosis. So we have to treat this disease in the correct way if we want to prevent the society, and we have to end the epidemic by 2025. See the facts regarding the tuberculosis. It is a common infectious and contagious disease worldwide. Someone in the world is newly infected with the tubercle bacilli every second. Still, that is the fact. And overall, 1/3 of the world population is currently infected with the tubercle bacilli. Same in India and same all over the world, except the European countries and Americans. And 5 to 10% of the people who are infected with the tubercle bacilli, that means the latent tuberculosis, they will become sick or infectious at some times during life. 10% can land into the active disease.
That's why nowadays the government program is concerned with to treat the latent tuberculosis also. है ना सर? अभी बात चल रही है कीमो प्रोफाइलेक्सिस, है ना? वो गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि अगर लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है देन यू हैव टू गिव कीमो प्रोफाइलेक्सिस. दैट इज द लेटेस्ट प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट, RNTCP. Now see the incidence and mortality in India. If you see, the incidence of tuberculosis is gradually decreasing. Number of notified cases are increasing. Similarly, the mortality is gradually decreasing, but not up to the extent what we are required. That I will tell you. So basics of tuberculosis, what we know about tuberculosis, it is a common contagious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. It can be pulmonary, it can be extrapulmonary. When it is outside the lung, then it is called as a extrapulmonary disease. It can be latent, it can be active. When the tubercle bacilli enters into the body, there can be two stages. Either it can be latent or it can be active disease. But latent stage can develop the active disease also in the future life. So it is more common in low socioeconomic strata, living in overcrowded areas, persons, healthcare workers, and history of inadequate treatment. You can make the diagnosis by the history, physical examination, symptoms, chest x-ray, sputum sample, and to detect the latent infection you can use the Montauk's and IGRA, what is called as a TB gold. That is the misnomer. TB गोल्ड एक ऐसा टर्म हो गया कि TB गोल्ड नाम का टेस्ट अगर करा लिया तो हाँ TB के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है. That is not. That is the trade name of this test, but actual name is gamma interferon. So we know that it is to be treated by the 4 drugs in the initial intensive phase, followed by 3 drugs for 4 months. So that we know about tuberculosis. So I will talk to you beyond this. So what are the types of tuberculosis? It is pulmonary when the attacks the lung, and extrapulmonary when other organs are involved. And believe me, every organ of the body can be involved by the tuberculosis. Each and every organ. We can have bony tuberculosis, we can have brain tuberculosis, we can have heart tuberculosis, we can have kidney tuberculosis. Every organ of the body can be involved by the tuberculosis. But still, our society is not concerned to make this, to eradicate this disease. So it is a drawback regarding the tuberculosis because it is a poor man's disease. So if you see the history of tuberculosis treatment, there can be 3 types of patients. One is new tuberculosis patient, one is previously treated patient, and one is recurrent TB patients. Why this is important? It is important to treat the disease because we have to take proper history of the patient if we want to treat the tuberculosis in the right way. What is new TB patient? Which is detected first time or has taken the treatment but less than 1 month. That is to be labeled as a new TB patient, and you can start the treatment directly without the culture and sensitivity report. But in previously treated patient and recurrent TB patient, you have to do the culture test. That is very, very important. It may be possible that you are dealing with a patient of MDR tuberculosis. That's why the patient has again developed tuberculosis and become the sputum positive. So these type of patients, you have to go for the drug sensitivity test. That is very important. So regarding the symptoms of tuberculosis, I already told each and every organ of the body can be involved by tuberculosis. Most common symptoms are night sweats, weakness, fever, dry cough, weight loss, GI symptoms if the GI tract is involved. Sir is a very renowned ophthalmologist. Even the involvement of the eye is very common by tuberculosis. Tubercular uveitis, almost 2 patients per week I am seeing of the tubercular uveitis, 2 to 3 patients. Very, very common. It is in the eyes. जब ब्लाइंड हो जाता है आदमी दिखाई नहीं देता तो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है ट्यूबरक्लोसिस. मैं सही कह रहा हूँ ना सर? दैट इज़ वेरी, वेरी कॉमन. Main sites of extrapulmonary tuberculosis, each and every organ, as already told. You can make the diagnosis in the very easy way of tuberculosis. If the patient is having a history of cough for more than 2 weeks, fever for more than 2 weeks, significant weight loss, history of hemoptysis, any abnormality in the chest x-ray or sputum examination showing the positive result, then you can make the diagnosis. Now comes the most important aspect, how to make the diagnosis of tuberculosis. That is, we have gynecologists, we have pediatricians, orthopedic surgeons. That is the most important thing I want to clear, how to make the diagnosis of tuberculosis.
So we have these type of test. We can do the AFB microscopy. Then we have nucleic acid amplification test, that is the gene expert. We can have AFB detection by the culture. We can have identification of the cultured mycobacteria. We are now having a molecular detection of drug resistance. We can do the drug sensitivity test for the first line drugs or second line drugs. And for latent infection, we have Montoux and IGRA, that is gamma interferon. So what is sputum examination? Sputum examination is very simple, very reliable test. If the patient is sputum positive, then you can directly start the treatment, if it is a first time. But sometimes the patient can be sputum negative and you are thinking of tuberculosis, then you have to rely on the culture reports, because smear negative can be the culture positive also. So at least 2 samples, one in the morning, and sensitivity can be low in HIV subjects and in children. If you are using the fluorescence microscopy, Dr. Meenu Chopla is here, then you can increase the yield of AFB detection by 10%. And if you sediment and centrifuge the sample, then you can further increase the yield by 20%. Am I right, Dr. Meenu? So if the patient is not having a sputum, then you can induce the sputum by nebulizing the patient with a saline. अगर किसी पेशेंट को स्पूटम नहीं आ रहा है तो कैसे लेना है? आप उसको सेलाइन से नेबुलाइज कर दीजिए, 5 ml सेलाइन नेबुलाइजर में डाल के और उससे नेबुलाइज कर दें. Then patient can induce the sputum and that can be sent for the examination. Culture is the gold standard to make the diagnosis. False positive can be because of contamination. At drug sensitivity, both first and second line. Now we have molecular test. These are basically on the gene amplification. Very good sensitivity, mainly in smear positive and extrapulmonary forms. That is the limitation of these molecular tests. Because culture can be done in smear negative patients, but these molecular tests are only for smear positive patients. That is the thing. ये चीज़ एक समझने वाली है कि कब आपको कल्चर कराना है, कब मॉलिकुलर टेस्ट कराने हैं, अभी मैं बताता हूँ. रीसेंट वन इज़ CB-NET और जीन एक्सपर्ट. CB-NET से तो ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस में बूम आ गया है ना सर? Because CB-NET is the most important test nowadays to make that early diagnosis of tuberculosis. I can say early diagnosis. It is still not the gold standard. Gold standard is still the culture. But CB-NET से diagnosis within 2 hours में मिल जाता है और culture से minimum 10 days you have to wait. But advantage of the CB-NET is it can detect simultaneously the rifampicin resistance also. So you are making the diagnosis and you are ruling out the MDR tuberculosis also. So that is a molecular test which is nowadays available in almost every lab, and the government is doing free of cost. Just radiography and interventional pulmonology. Sometimes you are dealing with the patient of MDR, mediastinal tuberculosis of lymph nodes or mediastinal lymph nodes. Then you have to take the help of interventional pulmonology in the form of bronchoscopy or endobronchial ultrasound. And now Montoux and IGRA. These 2 tests. These are only to detect the latent infection, not to detect the active tuberculosis. ये हमको बिल्कुल याद रखना होगा कि अगर हम मॉन्टूक्स करा रहे हैं या गामा इंटरफेरॉन या टीबी गोल्ड करा रहे हैं तो हम एक्टिव डिसीज़ को नहीं देख रहे हैं. वी आर रूलिंग आउट द लेटेंट इन्फेक्शन. तो अगर आपको लेटेंट इन्फेक्शन को ट्रीट करना है तो आपको मॉन्टूक्स और इग्रा कराना है. अगर आपको एक्टिव डिसीज़ को ट्रीट करना है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है. मैंने बहुत सी बार देखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ टीबी गोल्ड या इग्रा के बेस पे लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं. दैट इज़ नॉट द राइट वे. वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. अगर आपको बीमारी कंफर्म करनी है देन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कल्चर, बिकॉज दे ओनली डिटेक्ट द लेटेंट इन्फेक्शन, नॉट द एक्टिव डिसीज़. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मॉन्टूक्स एंड इग्रा? मॉन्टूक्स इज़ ए स्किन टेस्ट. द रीडिंग ऑफ द इंड्यूरेशन इज़ टू बी measured in the transverse diameter, not arrhythmia, and the disadvantage is you have to take the reading after 48 hours, and it is affected by BCG vaccination. Suppose कोई patient को BCG लगा हुआ है, इंडिया में तो सभी को लगता है BCG, तो मॉन्टूक्स का रीडिंग कैन बी चेंज्ड, बट जैसे जैसे एज बढ़ेगी मॉन्टूक्स में इसका इफेक्ट खत्म होता चला जाता है. तो बच्चों में ये कई बार प्रॉब्लम करता है.
जो इग्रा होता है, टीबी गोल्ड और गामा इंटरफेरॉन, it is not affected by BCG vaccination. The results are available on the same day, but it is costly than Montux. The mechanism is same. दोनों का mechanism, it both detects the adaptive immunity. दोनों का, एक 50 रुपये का होता है और एक 2000 रुपये का होता है. बट 50 रुपये वाले में आपको 2 दिन वेट करना है, प्लस इट इज़ अफेक्टेड बाई BCG वैक्सीनेशन. गामा इंटरफेरॉन 2000 रुपये का होता है, सेम डे रिजल्ट है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई BCG वैक्सीनेशन. तो अगर कोई पेशेंट आपको लगता है कि 40-50 साल का है, जहां आपको लगता है कि BCG का इफेक्ट खत्म हो चुका है, देन यू कैन गो फॉर द मोंटूक्स, सिंपल 50 रुपीज़ टेस्ट. आपको लगता है कि बच्चों में कराना है, देन डेफिनेटली द टीबी गोल्ड और द इग्रा इज़ हेल्पफुल. तो ये दोनों में डिफरेंस है कि हमको कौन सा टेस्ट कब कराना है. सो दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ मोंटूक्स टेस्ट. दिस इज़ इग्रा. मैं इग्रा के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज आजकल इसका बहुत ज़्यादा फैशन है और सभी लोग इसी को कराते हैं, टीबी गोल्ड को. इट डिटेक्ट्स द एडेप्टिव सेलुलर इम्यूनिटी टुवर्ड्स द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस स्पेसिफिक एंटीजेंस एनकोडेड बाय जीन्स लोकेटेड इन RD1 जीनोमिक रीजन. ये जीन्स को डिटेक्ट करता है. इट इज़ डन बाय यूजिंग द ब्लड. अभी कुछ इसके ऊपर रिसर्च भी चल रहा है कि जो टिश्यू सैंपल है हम वहाँ से भी कर सकते हैं. सपोज एंडोमेट्रियल टिश्यू या बायोप्सी सैंपल्स, वहाँ से भी इग्रा को कर सकते हैं. The specificity is better than Montux because it is not affected by BCG vaccination. But this test is not sufficient to rule out active disease. It only detects the latent infection. ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ. मगर if the patient is having a Montux positive और IGRA positive, तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आपको पता चल गया कि पेशेंट को लेटेंट इन्फेक्शन है. वो जो 40% वाली कैटेगरी है उसमें आ गया वो. तो चांसेस ये हैं कि आगे आने वाले 2 साल में पेशेंट एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में लैंड कर सकता है. अब आपको उसको ट्रीट करना है या नहीं करना है, दैट इज़ अप टू यू. ये डिसाइड करना है कि आपको उसको कब ट्रीट करना है, कब नहीं करना है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Chest X-ray is not the diagnostic method to rule out the tuberculosis, but definitely you can suspect that the patient may be having tuberculosis. Few signs in the chest X-ray like cavity formation in the upper lobes, they are significant and they can help in making the diagnosis of tuberculosis. Regarding the culture, 2 types of culture are there. One is solid culture, which was previously used. Nowadays we are using the liquid culture methods because they are easy to perform. The results are quick. Almost in 10 days you can get the results of liquid culture, which is called as a Bactec MGIT 60. Still, it is a gold standard to make the diagnosis and to do the drug sensitivity test when the patient is smear negative. So what are the recommendations by WHO regarding this culture? Liquid culture is feasible for implementation in lower income settings. Liquid culture has a higher rate of mycobacterial isolation and a shorter time to detection compared with the solid culture. The advantage of the liquid culture, another advantage, it can differentiate between the atypical and typical mycobacteria. Suppose you are dealing with a patient of atypical mycobacteria, that is Mycobacterium tuberculosis other than Mycobacterium, then you can differentiate because the treatment is different for atypical mycobacteria. So MGIT Bactec is, I think, available in the government settings also. Sir, आपके यहाँ तो होता ही है ये MGIT Bactec. The latest advancement in the another methods of diagnosis regarding the tuberculosis. Basically, the tuberculosis diagnosis can be divided into 2 categories. मैं आपको इसमें और भी सिंपल बताता हूँ. एक होता है ट्यूबरक्लोसिस केस डिटेक्शन, कि आपको ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस कब करना है. दूसरे मेथड्स हैं ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के. तो 2 चीज़ों में याद रखिए आप कि केस डिटेक्शन में कौन कौन से हैं और ड्रग सेंसिटिविटी के लिए कब आपको टेस्ट कराना है. तीसरा होता है लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए, वो 2 टेस्ट मैंने आपको बता दिए, मोंटूक्स एंड इग्रा. अब केस डिटेक्शन के लिए सबसे पहले तो हो गया स्पूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी. अगर स्मीयर पॉजिटिव है आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं. अगर आपको कल्चर कराना है आप जीन एक्सपर्ट का हेल्प ले सकते हैं या कल्चर का हेल्प ले सकते हैं. अगर स्मीयर नेगेटिव है तो फिर तो आपको कल्चर कराना ही कराना है, फिर किसी और टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं. तो बाकी जो टेस्ट हैं विच वर डिस्कवर्ड बाई ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे आर यूजिंग, दिस इज़ अ लैम्प एसे, दैट इज़ ए मीडिएटेड एम्पलीफिकेशन टेस्ट, that is mainly for HIV individual when the CD4 count is low.
अनदर वन इज़ लाइपो अराबिनोमिनेंट टेस्ट, दैट इज़ अ लैम टेस्ट. दिस लैम जो होता है ना, ये लैम यूरिनरी एंटीजन में सिक्रीट होता है इन द पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, तो वहाँ से डिटेक्ट करता है, एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन HIV पेशेंट्स. नाउ द मेथड्स फॉर द ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, जो मैं दूसरी चीज़ बता रहा था, आपने डायग्नोसिस बना लिया, पेशेंट इज़ हैविंग ट्यूबरक्लोसिस. नाउ यू आर थिंकिंग द पेशेंट मे बी हैविंग MDR ट्यूबरक्लोसिस, देन व्हाट यू हैव टू डू. अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट. वन इज़ ए फिनोटिपिक टेस्ट एंड वन आर जीनोटिपिक टेस्ट. व्हाट इज़ फिनोटाइप एंड व्हाट इज़ जीनोटाइप? फिनोटाइप मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड एज ए फिनोटाइप, जो आपको दिख रहा है. एंड जीनोटाइप्स व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द जीन्स, दैट इज द जीनोटिप. तो जीनोटिपिक मेथड्स आर ऑलवेज बेटर देन फिनोटिपिक मेथड्स. सो दीज जीनोटिपिक मेथड्स आर मॉलिकुलर मेथड्स. So the gold standard is culture. That is the phenotypic method, but based on the culture methods, liquid culture. Regarding the genotype methods, there are two types of methods which are available nowadays very frequently and in the government setup also. That is line probe assays, LPA. आपने नाम सुना होगा. अब LPA दो तरीके के होते हैं, LPA1 and LPA2. LPA1 is available almost. दीपाली जी आपके यहाँ है LPA? हाँ. LPA1 क्या होता है, अब मैं बताता हूँ आपको. जीन एक्सपर्ट और LPA में फ़र्क क्या है. जीन एक्सपर्ट में खाली रेफेम्पिसिन का डिटेक्शन होता है, आइसोनेक्स का नहीं होता है. आपको पता चलेगा कि पेशेंट को रेफेम्पिसिन रेसिस्टेंस है कि नहीं है. बट LPA1 जो होता है, इट कैन डिटेक्ट द रेसिस्टेंस टू रेफेम्पिसिन ऑल्सो, टू आइसोनेक्स ऑल्सो. मगर ऐसा देखा गया है कि इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग ए रेसिस्टेंस विद द रेफेम्पिसिन, तो 80% लोगों को आइसोनियाजिड रेसिस्टेंस होता ही होता है. तो अगर आपको लगता है, डाउट है, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ LPA. LPA का रिजल्ट जो होता है 2 दिन में आ जाता है. ये इसका डिसएडवांटेज है कि 2 दिन लगेंगे, बट वेरी अर्ली. और LPA2 जो होता है, दैट इज़ फॉर द सेकेंड लाइन एजेंट्स लाइक द फ्लोरोक्विनोलोन्स और इंजेक्टेबल्स, इनके लिए होता है. और मैंने तीसरा आपको जीन एक्सपर्ट और CB-नेट के बारे में मैं अलग से बता दूंगा कि व्हाट इज़ CB-नेट. सो दीज आर द टेस्ट. बाकी जो LPA मैंने आपको बता दिया है फॉर DST. द अनदर टेस्ट विच आर अवेलेबल नाउ डेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रग ससेप्टिबिलिटी और MODS. दिस इज, दे आर डिटेक्टिंग द माइक्रो कॉलोनीज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन द लिक्विड मीडिया. Nitrate reductase assay and calorimetric redox indicator, they are not routinely recommended to screen the tuberculosis. They are mainly for the research program. So to summarize these tests, we have smear microscopy, which is inexpensive, simple, rapid, but cannot differentiate between the typical and atypical mycobacteria. That is very important. Smear microscopy से आप you cannot differentiate between the typical and atypical. You can take the help of LED microscopy, but you cannot differentiate between the typical and atypical mycobacteria. Then comes the gene expert, most important test, detects the tuberculosis in smear negative patients also and can detect the rifampicin resistance within 2 hours. अब कॉस्टली तो नहीं है ना सर, अब तो गवर्नमेंट तो फ्री में ही करती है, तो कॉस्टली की तो बात ही नहीं है. अनदर टेस्ट, द लैम्प एसे एंड अदर जो टेस्ट होते हैं, दे आर नॉट routinely recommended by WHO in various programs. And I already told you about the interferon to detect the latent infection. WHO also says that it is not recommended for the diagnosis of active tuberculosis. Then the test for the drug susceptibility test, we can take the help of culture, liquid culture, that is a commercial Bactec MGIT. It detects the resistance against almost all the drugs. Line probe assays for the first line, second line. These are available and we can take the help of line probe assays also. दीपाली जी बता रही हैं कि इनके यहाँ होता है line probe assay. I think line probe assay 1 होता है, 2 नहीं होता है. Line probe assay 2 भी हो रहा है? Very good. तो line probe assays अगर है तो we can get the result within 2 hours. But the limitation is patient has to be smear positive. Then you can send the sample for line probe assay. Smear negative में नहीं होगा. That is the limitation of line probe assay. अगर smear negative है तो आपको कल्चर का हेल्प लेना है, लिक्विड कल्चर. ये एक चीज़ याद रखने वाली है कि अगर पेशेंट अगर स्मीयर पॉजिटिव है तो आप लाइन प्रोब ऐसे कर सकते हैं, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा. अगर स्मीयर नेगेटिव है
then you have to take the help of culture और 10 दिन आपको wait करना पड़ेगा. That is the important thing. Then what are the future diagnostics? These biomarkers can come in the future. Host biomarkers and pathogen biomarkers, and the various trials are going on to make the early diagnosis of tuberculosis. They can directly hit the target and they can make the diagnosis within 15 to 20 minutes. The research is going on. These are the various methods, but the recent breakthrough in the TB diagnosis is CBNet, which is the most important test to make the diagnosis. What the WHO says regarding the CBNet: should be used as an initial diagnostic test in all adults and children having the tuberculosis, or in those suspected of having MDR TB or HIV associated tuberculosis. Should be used in the initial diagnosis in patients of tubercular meningitis, and replacement test for usual practice for testing specific non-respiratory specimens like the gynecological tuberculosis also. You can send the sample for CBNet or GeneXpert and can detect, they can make the early diagnosis, can detect the resistance also, and they are helpful in extrapulmonary. What is the limitation of CBNet? हमने फायदे भी देख लिए तो नुकसान भी देखना है इसका क्या है. The limitation of CBNet is it can detect the dead bacilli also because it is a molecular test. So it is very, very important to make the early diagnosis of tuberculosis, but you cannot follow the patient with a CBNet. अगर आप बाद में करा रहे हैं ना ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद, तब भी ये पॉजिटिव आ सकता है. तो अगर पहले करा रहे हैं तो हेल्पफुल है. ऐसा नहीं करना है कि बाद में भी करा के देख लिया कि CBNet है कि नहीं पॉजिटिव, तो वो तो आ सकता है पॉजिटिव, बिकॉज इट कैन डिटेक्ट द डेड बेसिलाई. So this is very important regarding the CBNet limitation. You must know what can be the limitation of CBNet or GeneXpert. So RNTCP जो अभी कर रहा है, what the methods they are using: sputum smear microscopy, culture they are doing the drug sensitivity, they are doing the line probe assays. GeneXpert कुछ ना कर रहे हो तो आप बता दीजिएगा, मैं बता तो रहा हूँ, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, मैंने लेटेस्ट डाटा भी निकाला है. The chest X-ray nowadays is recommended as a screening tool. पहले नहीं था आपके RNTCP प्रोग्राम में, but now they are recommending the chest X-ray also. If you are having a clinical suspicion, patient is smear negative and the chest X-ray is positive, then you can take the help of culture, or you can start the treatment of tuberculosis also. TST and IGRA, I already told. The important thing nowadays is serological test, जो ELISA पहले होता था. WHO has said that it is banned nowadays in India, should not be done in patients of tuberculosis to make the diagnosis. It should not be done because it is not specific, not sensitive, very false readings, और blood में है, इसका कोई use नहीं है. If you want to make the diagnosis properly, you have to send the sample from the proper site. So think of tuberculosis. If you do not, the lab cannot help you. Dr. Meenu, am I right? Do not use the microbiological test as a screening test. Remember, the best way to improve the sensitivity is to submit the high quality specimens. Molecular test cannot replace the culture. Culture is still the gold standard, and labs should meet the current quality standards. Now the treatment aspect. How you can make the proper diagnosis and how you can treat the tuberculosis. Suppose the patient of tuberculosis comes to you. You have to do the smear examination and you can go for the chest X-ray. If the smear is positive, that means the patient is a candidate of ATT. If the patient is smear positive but chest X-ray is negative, then it's also again the anti-tuberculosis drug. But the problem comes when the patient is smear negative and chest X-ray is suggestive of tuberculosis, or when the patient is smear negative, chest X-ray is also negative, but the clinical suspicion is high that you may be dealing with the patient of tuberculosis, then you have to take the help of CBNet. अब CBNet आपने करा लिया, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है CBNet में? CBNet में 3 रीडिंग्स आ सकती हैं. पेशेंट कैन बी रेफेपिसिन सेंसिटिव, कई बार लिखा आ जाता है रेफेपिसिन इनडिटर्मिनेट. ये CBNet में कई बार आता होगा, आपने देखा होगा कि पेशेंट में लिखा आ जाएगा रेफेपिसिन इनडिटर्मिनेट. अब क्या करेंगे? रेफेपिसिन सेंसिटिव है तो ठीक है, रेफेपिसिन रेसिस्टेंट है तो भी ठीक है, मगर इनडिटर्मिनेट आ गया तो क्या करना है? यस, वेरी गुड.
अगर इनडिटर्मिनेट आया तो आपको सेकंड सैंपल भेजना है, दोबारा से सीबी नेट कराना है। अगर दोबारा में भी इनडिटर्मिनेट आ गया तो क्या करेंगे? तब कल्चर कराएंगे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सीबी नेट की रीडिंग को आपको कैसे देखना है। अगर रेफेम्पिसिन सेंसिटिव है कोई बात नहीं, रेफेम्पिसिन रेसिस्टेंट है तब आपको पता चल गया यू आर डीलिंग विद द पेशेंट ऑफ एमडीआर ट्यूबरक्लोसिस। अगर इनडिटर्मिनेट है तो आपको सेकंड सैंपल भेजना है। सेकंड में अगर आप कंफर्म हो गए तो ठीक है, अगर फिर इंडिटर्मिनेट आ गया देन यू हैव टू सेंड द सैंपल फॉर द कल्चर, तब आप डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे। सिमिलरली फॉर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ऑलवेज सेंड द सैंपल फ्रॉम द साइट। अगर आप लिम्फ नोड को डील कर रहे हैं या नई गाइडलाइंस में, ठीक, बट मुझे लगता है कि अगर इनडिटर्मिनेट आ रहा है तो कल्चर का हेल्प लेना चाहिए। मुझे लगता है कि कल्चर तो होना चाहिए, बिकॉज इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि आप श्योर नहीं है। वो ठीक है, बट मुझे लगता है कि मतलब मेरा अपना व्यू ये है कि अगर इनडिटर्मिनेट है या अगर इनडिटर्मिनेट है दैट मीन्स कि वी आर नॉट श्योर दैट वी आर डीलिंग विद द पेशेंट ऑफ एमडीआर और नॉट, तब हमें कल्चर कराना चाहिए। बिकॉज कल्चर इज स्टिल द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड टू मेक द डायग्नोसिस। अगर कल्चर पॉजिटिव है तो ट्रीट करना है, नहीं है तो नहीं करना है। मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है। सर सैंपल तो फ्री में टेस्ट होता है तो सब देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, चलिए, मुझे लगता है कि आगे शायद हो सकता है कि वो कल्चर वाला ही गाइडलाइन आए, बिकॉज इट इज़ अ करेक्ट वे टू ट्रीट द ट्यूबरक्लोसिस। इनडिटर्मिनेट सैंपल वी कैन नॉट ट्रीट। मतलब इफ scientific rationale you can see, if we are having a culture facility and culture is a gold standard method to make the diagnosis, then why indeterminate sample we are treating? 10 days, liquid culture takes 10 days. That is the thing. ये बात तो है, but liquid culture तो आसानी से हो सकता है। MGIT Bactec is now, it is not costly. For extra pulmonary tuberculosis, you have to take the sample from the site. अगर आपका lymph node है तो आपको यहाँ से सैंपल लेना है। अगर गायनिक का ट्यूबरक्लोसिस है तो गायनी से लेना है। हाँ, आइज़ में प्रॉब्लम आता है। हाँ जी सर, अगर आइज़ में ट्यूबरक्लोसिस है तो प्रॉब्लम आता है कि सैंपल कहाँ से लें, वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। अगर you are dealing with a patient of tubercular uveitis and you are suspecting tuberculosis, then you cannot take the sample from the eye. It's a very small organ. तब आपका clinical suspicion है. Then you have to take the help of IGRA, Montux, all other investigations you have. वैसे ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि अगर आई में ट्यूबरक्लोसिस है तो उसका प्राइमरी कहीं ना कहीं और होता है, आइदर इन द लंग्स और समवेयर एल्स। यूजली इन 80% केसेस इट इज़ इन द लंग्स, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं कई बार मुझे सीटी स्कैन और एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस को डील करना पड़ता है। डॉक्टर राजीव, दिस इज़ द एल्गोरिथम टू make the diagnosis of pediatric pulmonary tuberculosis. We will talk to you later on. Regarding the anti-tuberculosis drugs, what are the changes we are having in the anti-tuberculosis drugs? First line we know, we are having isoniazid, rifampicin, ethambutol and pyrazinamide. The change, what we are having now, isoniazid, the dose can be increased up to 900 milligram per day, which we are dealing in patients of MDR. Bidacoline containing short course regimens for MDR. मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? And the dose of the isoniazid in those cases are up to 900 milligram per day. पहले कितनी डोज थी? 300 milligram maximum, but now it is 900 milligram. Regarding the rifampicin, the dose is a maximum up to 600 milligram. What are the side effects of rifampicin? Hypersensitivity, hepatitis. When you are giving your patient rifampicin, chances of hepatitis will be very, very high. And discoloration of the urine, which is called as a red man syndrome. Ethambutol, the dose can be increased up to 1600 milligram. 800 नहीं है सर वो, जो 800 1000 होती थी. Now it is up to 1600 milligram. And the most common side effect is optic neuritis. Remember, if the patient is having optic neuritis because of the ethambutol, it is a irreversible damage. सर आँखों वाले डॉक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ATT में.
तो इट इज़ ए इरिवर्सिबल डैमेज, इट इज़ नॉट ए रिवर्सिबल डैमेज. आपको ये मॉनिटर करना है एंड यू हैव टू स्टॉप द इथम्बिटॉल इमीडिएटली इफ़ द पेशेंट इज़ कंप्लेनिंग ऑफ डिमिनिशन ऑफ विजन और लॉस ऑफ विजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. जितने भी लोग ट्यूबरक्लोसिस में काम करते हैं अगर इथम्बिटॉल दे रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है लोग ब्लाइंड हो जाते हैं इसकी वजह से. दैट इज़ वेरी कॉमन कि वो मॉनिटर नहीं होता, पता भी नहीं चलता कि क्यों हो रहा है, बट वो ब्लाइंड भी हो जाते हैं. ऐसा भी होता है. मेरे पास आए इस तरीके के केसेस मैंने बहुत देखे. एंड पाराजिनामाइड द डोज कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 2000 milligrams per day, that is 2 grams per day. The most common side effect of parazinamide is hyperuricemia. When the patient is complaining of joint pain after taking the parazinamide, always order uric acid. If the uric acid is increased, you have to add the drugs or you have to stop the parazinamide because of the hyperuricemia. Group 2 are the injectables: streptomycin, amikacin, capreomycin, kanamycin. Very limited role nowadays in the management of tuberculosis. Injectables are to be avoided in patients of tuberculosis. Group 3 are the fluoroquinolones, levofloxacin. Now the dose is not 750 milligram for tuberculosis, it is 1 gram. If you are dealing with a patient of MDR tuberculosis and you want to use levofloxacin, the dose is 1 gram, not 750 milligram. Moxifloxacin is nowadays drug of choice, the dose is 400 milligram. But when you are using moxifloxacin, always monitor by ECG because it can prolong the QT interval. That is the most common side effect of moxifloxacin. Group 4 are the drugs which are mainly for MDR tuberculosis: rifabutin, ethionamide, cycloserine, PAS and thiacetazone. Group 5 are the reserve drugs. Nowadays, the linezolid has come up in the patients in the management of MDR tuberculosis. The short course bedaquiline containing regimens for MDR tuberculosis, they are using linezolid. The dose is 600 milligram per day. The most common side effects of linezolid are thrombocytopenia, anemia, neuropathy. Clofazimine, amoxicillin, clavulanic acid, clarithromycin, cefotaxime, imipenem, silastine, and high dose isoniazid, that is 900 milligram. So these drugs can be used in the management of patients of tuberculosis. See the advancement in the tuberculosis. The two drugs which are new for the management of MDR tuberculosis are bedaquiline and delenamide. ये अभी सिर्फ गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल, नॉट अवेलेबल फॉर द प्राइवेट डॉक्टर्स. फ्री हो गई सर? सब वेरी गुड सर. मतलब मुझे तो बहुत समय से इसकी तलाश थी बेडाकुलिन की कि ये मिलनी चाहिए और हम लोगों को नहीं मिल पा रही थी सर. बहुत अच्छी न्यूज़ है सर ये. But the problem with the bedaquiline should be used when you are dealing with an adult patient more than 18 years of age, not in the pediatric age group. Delaminate can be used in less age group, 6 years onwards, but bedaquiline cannot be used. And if you see, government sector is using bedaquiline in MDR tuberculosis. Bedaquiline should be used very, very carefully. मुझे लगता है कि गवर्नमेंट वालों ने तो सब पढ़ा ही रखा होगा. And these are the drugs which to be avoided when you are using bedaquiline because they are having interaction with the bedaquiline. This is complete list of the drugs which are to be avoided with bedaquiline. That is very, very important. And they clearly mention which drug can be used, which drugs cannot be used along with the bedaquiline. Bedaquiline is very good drug for the patients of MDR tuberculosis. In fact, it will be a boom in future also for the management of MDR tuberculosis. We all know there are two phases in the management of tuberculosis: initial intensive phase and the continuation phase. What are the changes that WHO has done in the RNTCP program to manage the tuberculosis? आपको याद होगा पहले ना continuation phase में दो दवाई चला करती थी, रेफेम्पिसिन and isoniazid. इथम्बिटॉल को यूज़ नहीं करते थे. But nowadays the recommendation is you have to use ethambutol in the continuation phase also. सब प्राइवेट सेक्टर में ना ज़्यादातर लोग इथम्बिटॉल को यूज़ करते थे कंटिन्यूएशन फेज़ में, बट डॉट्स का प्रोग्राम था पहले, फिर आरएनटीसीपी ये सब प्रोग्राम जो चले उसमें इथम्बिटॉल को अभी कुछ समय से इंक्लूड किया है कि कंटिन्यूएशन फेज़ में. इसका रीज़न ये था सर कि हमारे कंट्री में इनिशियल आईएनएच रेसिस्टेंस बहुत हाई है सर. मतलब जो हम लोग पेशेंट्स को डील कर रहे हैं तो हमें ये पता नहीं है कि इसमें रेसिस्टेंस आईएनएच का है नहीं है, और ये इट इज़ प्रेजेंट अप टू द ट्यून ऑफ 14%. तो गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि 14% आईएनएच रेसिस्टेंस है, तो जिसमें आईएनएच रेसिस्टेंस है तो
तो उसमें रेफेम्पिसिन के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर कंटिन्यूएशन फेज़ में आप रेफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड को यूज़ कर रहे हो तो आयनिस्ट तो रेसिस्टेंस है, तो वो पेशेंट सिंपल ट्यूबरक्लोसिस के एमडीआर में कन्वर्ट हो जाते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने इथम्बिटॉल को उसमें ऐड कर दिया। दैट वाज द रीज़न वाई द इथम्बिटॉल वाज एडेड इन द कंटिन्यूएशन फेज इन ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। पहले सर इंटरमीडिएट थेरेपी यूज़ होती थी, नाउ इट इज़ ए डेली थेरेपी। दैट इज़ बिकॉज द फेलियर रेट वाज हाई विद द इंटरमीडिएट थेरेपी। ये भी बहुत पहले से बात चल रही थी कि इंटरमीडिएट को डेली में क्यों नहीं कन्वर्ट किया जा रहा। गवर्नमेंट कहती थी कि नहीं, इंटरमीडिएट से कुछ बजट का प्रॉब्लम था, हम लोग बिकॉज वी आर इन द पुअर कंट्री, तो इसके भी ऊपर भी प्रॉब्लम आ रही थी। मगर अब क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि इंटरमीडिएट थेरेपी इज़ नॉट सो मच सक्सेसफुल इन कंपैरिजन टू द डेली थेरेपी, तो अब गवर्नमेंट ने डेली थेरेपी पे कर दिया। मगर सर प्राइवेट में हमेशा डेली थेरेपी चलती थी, नॉट इंटरमीडिएट। तो ये फैक्टर्स थे, कुछ चेंजेस जो गवर्नमेंट ने किए थे। नाउ ट्यूबरक्लोसिस एंड प्रेगनेंसी फॉर गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट तो काफ़ी सारी हैं, उनके मतलब की बात आ गई है। Incidence between 1 to 2% among the hospital deliveries in the tropics, predominantly seen in the underprivileged sectors of the society. अब ये मिथ नहीं रहा, अब तो सभी में हो जाता है। Risk factors are positive family history, low socioeconomic status, high prevalence areas, HIV infection, and IV drug abusers. Important improved living conditions, good ventilation, and good nutrition is very important aspect to manage a patient of tuberculosis. Regarding the obstetrical part, if the patient is under medical supervision and with adequate treatment, pregnancy has got no deleterious effect on the course of disease, nor the disease has any adverse effect on pregnancy. अगर medical supervision में है, in active disease, the fetus can be affected by transplacental route or by the aspiration of amniotic fluid. In untreated disease, the incidence of IUGR, preterm labor, preeclampsia, spontaneous abortion, PPH, anemia, and perinatal mortality is high. So it is very, very important to treat the tuberculosis when your patient is pregnant. उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी. Newborn baby is at risk of postnatally acquired tuberculosis if mother has still tuberculosis at the time of birth. इसको कैसे मैनेज करना, I will tell you. Regarding the medical management of tuberculosis in pregnancy, medically you have to manage with the anti-tuberculosis drugs. Regarding the obstetrical management, if the patient with active or recently active tuberculosis, delivery under regional anesthesia with forceps when necessary to avoid excessive straining during the second stage of the labor is advised. डॉक्टर वाणी ठीक है बिल्कुल? अच्छा. Spinal or epidural anesthesia are preferred than inhalational anesthesia for the fear of contamination. Isoniazid preventive therapy, that is a new entity in the management of pregnancy. It is by WHO to reduce the infection of HIV positive pregnant women based on the evidence that the pregnancy should not be a contraindication to receive the isoniazid preventive therapy. Suppose you are dealing with a patient of HIV with pregnancy, then you can use the isoniazid preventive therapy in that patient. That is by WHO guidelines. If the patient is on ATT, breastfeeding is not contraindicated provided you are dealing with the active disease. If the patient is smear negative, you continue the breastfeeding and you continue the ATT. The breastfeeding should be avoided if the patient is suffering from active disease and baby is isolated from mother following delivery. If you are dealing with the active disease, baby should be given the INH prophylaxis when the mother is suffering from active disease. BCG vaccination to the baby as early as possible. But remember, BCG vaccination is contraindicated in pregnancy. उसमें नहीं देना. Regarding the contraception and tuberculosis, ideally pregnancy is to be avoided until the quiescence is assured for about 2 years. Spacing can be achieved by any methods acceptable to the couple. Oral contraceptives should be avoided because they are having interaction with the rifampicin. A barrier method is preferred. Perpetual sterilization should be done if the family is completed. That is the guidelines for the tuberculosis. Some special situations in pregnancy, not a contraindication to the treatment of active tuberculosis. All first line anti-tuberculosis drugs are safe.
You can use isoniazid, rifampicin, ethambutol or pyrazinamide, all the first lines. In proper dose, you can, as per the body weight, you can use the drugs. If you are dealing with a patient of MDR tuberculosis, you can start the treatment of drug resistant in the second trimester, not in the first trimester. But you have to avoid injectables, quinolones, ethinomide and prothionamide. These drugs are to be avoided in pregnancy. Regarding the lactation part, should receive a full course of anti-tuberculosis drugs, and mother and her baby should not be completely separated if you are not dealing with a patient of active disease. Regarding contraception, मैंने बता दिया आपको. Now, Dr. Jindal, regarding the diabetes, because it is very, very common in patients of tuberculosis. How to manage a patient of tuberculosis with diabetes? Insulin is the drug of choice in patients of diabetes, because the blood sugar level will fluctuate during the course of management of tuberculosis because of the hormonal changes. So you can easily manage the blood sugar by the use of insulin. So insulin is drug of choice. Suppose if the patient is not willing to take the insulin, then so many anti-diabetics nowadays available, very good, very effective, but you have to manage diabetes in a proper way, because if your blood sugar is not under control, the tuberculosis will not into the control. That is very, very important. Regarding the renal insufficiency, when your patient is CKD patient, the drugs to be avoided are injectables, ethambutol is to be avoided. In the primary line, isoniazid can be used. Rifampicin can be used in the full dosage. Rifampicin is the safest drug in CKD patients. Pyrazinamide in the reduced doses can be used. Isoniazid in the reduced doses can be used, but you have to avoid streptomycin and you have to avoid ethambutol in the CKD patients. Regarding the liver disorders, the drugs which are hepatotoxic are isoniazid, rifampicin and pyrazinamide. You can use ethambutol in full doses. You can use quinolones. Suppose this patient, you are dealing with a patient of chronic liver disease, then you have to avoid rifampicin and pyrazinamide. You can use the isoniazid, you can use the ethambutol and you can use the quinolone. Quinolone can be used in this situation. The guidelines by the WHO says that you can use 2 hepatotoxic drugs like isoniazid, rifampicin, ethambutol for 9 months, but you have to avoid pyrazinamide. That is the most hepatotoxic agent among all the ATT. Or isoniazid, rifampicin plus ethambutol or streptomycin for 2 months, followed by isoniazid and rifampicin for 7 months. Or you can use quinolone. Or if you do not want to use any hepatotoxic agent, then you can use streptomycin, ethambutol or fluoroquinolone for 18 to 24 months. Regarding the HIV patients and ATT, first they start ATT when the patient tolerates the treatment for 2 weeks to 2 months, then initiate the antiretroviral treatment. But first you have to control the tuberculosis, then HIV. Now come the latent tuberculosis and active disease. What is the difference between the latent tuberculosis and active disease? Dr. Rajiv Garg is here, pediatrician. So latent tuberculosis and active disease both means that we are having a tubercle bacilli inside our body, as our country is having 40% people of the country are infected with the tubercle bacilli, and in these patients the Montaux and IGRA are positive. In latent tuberculosis, chest X-ray is usually normal, sputum smear is negative, no symptoms, not infectious, and it is not a case of TB. In TB patients, chest X-rays are usually abnormal, symptoms can be positive, and that is labeled as a case of tuberculosis. So what are the guidelines in patients of latent tuberculosis? Presence of multi-drug resistant in the body without any, Mycobacterium tuberculosis in the body without any sign and symptoms, or radiographic or bacteriological evidence. What are the guidelines or the chemoprophylaxis of latent tuberculosis? You can use 6 months of isoniazid monotherapy, 9 months of isoniazid monotherapy, 3 months of weekly rifampicin plus isoniazid, 3 to 4 months of isoniazid plus rifampicin and 3 to 4 months of rifampicin monotherapy. सर मुझे ये नहीं पता कि अभी गवर्नमेंट में कौन सी मतलब किस रेजिमेंट को दे रहे हैं आप लोग सर? 6 month isoniazid, 6 months isoniazid.
तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. सर बता रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू ट्रीट द लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस 6 months of isoniazid can be used in the अच्छा आज हो रही है सर. Regarding the drug resistance, India and China, almost 50% of drug resistant problems are in the India and China. This is the example of oral bidaculin containing multi-drug resistant regimens, and you can see the dose of isoniazid is 900 milligram. What is MDR? MDR when the resistance to isoniazid and rifampicin. What is XDR? When patient of MDR is having resistance to fluoroquinolone and one of the 3 injectables. Matlab isoniazid, rifampicin, fluoroquinolone and injectable. That is called as a XDR. Now another entity came which is called as a TDR. That is a total drug resistance. See why they are coming. पहले तो simple MDR आया, फिर XDR आया, now it is TDR and few cases are there for TDR also. Government में भी हैं, private sector में भी हैं TDR cases. Why this drug resistance came? Essentially it is a man-made phenomena. मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ man-made क्योंकि सर जब ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट शुरू हुआ था 1940 में, अगर आप ट्यूबरक्लोसिस का हिस्ट्री देखें, द फर्स्ट ड्रग केम इन 1940 एंड द ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट वाज स्टार्टेड. तब तो कोई एमडीआर नहीं था. एमडीआर तो बाद में ही आया जब हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट शुरू किया. तो इट इज़ ए फॉल्ट ऑफ द डॉक्टर ऑल्सो, इट इज़ ए फॉल्ट ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो एंड इट इज़ ए फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑल्सो. वाई दिस एमडीआर केम? दैट वी हैव टू थिंक. Now XDR, now TDR. So we have to stop this chain and we have to basically deal with these patients immediately. So it is a man-made phenomena. It may be because of irrational use of the drugs, improper combinations and short optimal doses and duration. Sir, अभी एक survey हुआ था recently मुंबई में कि why this is called as a man-made phenomena. Sir, 67 types of prescription of tuberculosis. मतलब लोगों को लगता है ना कि टीबी का ट्रीटमेंट बहुत आसान है, तो 67 टाइप के प्रिस्क्रिप्शन थे, 67 टाइप्स. कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है. तो फिर तो एमडीआर तो होना ही है ना सर. अगर आप ट्यूबरक्लोसिस को ड्रग्स को प्रॉपर डोजेज में नहीं दे रहे हो, प्रॉपर टाइम में दे दो, सिंपल ट्यूबरक्लोसिस विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू एमडीआर. So that was a study in Mumbai. 67 types of prescription for a patients of simple tuberculosis were seen. जो होना एक ही चाहिए सर, but 67 types. बिल्कुल सर, सभी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें हैं सर, सभी. So basically in the management of MDR tuberculosis, 3 things are very very important. नेवर एड ए सिंगल ड्रग टू द फेलिंग रेजिमेन. अगर आपका ट्रीटमेंट फेलियर है, आपको लग रहा है ट्रीटमेंट फेलियर हो गया, नेवर एड ए सिंगल ड्रग. प्रीवियस टीबी ट्रीटमेंट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस. अगर प्रीवियस हिस्ट्री है ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट की, ऑलवेज यूज द कल्चर मेथड्स. डोंट स्टार्ट द एटीटी अगेन बिकॉज इट मे बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद द पेशेंट ऑफ एमडीआर. एंड अडेरेंस टू द ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी सर बोल रहे थे. So this is regarding the MDR, and it has been seen that 80% of the rifampicin resistant isolates are resistant to isoniazid. That's why CBNet is the very very important test to make the diagnosis of MDR, because it detects the resistance to rifampicin. What is the vision of the government? TB free India with a 0 deaths, disease and poverty because of tuberculosis, and to achieve a rapid decline in morbidity and mortality due to tuberculosis while working towards the elimination of tuberculosis in India by 2025. The government is working very hard and they are involving the private practitioners also. That is a very very important aspect. If you see the evolution of national tuberculosis elimination programs, and it was started in 1962. When the government of India launched the National Tuberculosis Program and set up the District Tuberculosis Center. But the boom came in 2012 and 2017 when the gene expert came to make the early diagnosis of tuberculosis. And now in 2021, the government has given the
Nara of TB Mukt Bharat Abhiyan by 2025. So these are the milestones in the tuberculosis programs in India. In 2007, there is the initiation of drug-resistant tuberculosis services. In 2012, MDR tuberculosis treatment was launched. In 2017, the National Strategic Plan 2012 and 2017, and 2020, that is the introduction of TrueNet. दो टेस्ट होते हैं, एक CBNet होता है, एक TrueNet होता है. Can anybody tell the difference between the TrueNet and CBNet? डॉक्टर मीनू को तो पता ही होगा, आप तो रहने दो. आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से आप बताइए सर. हाँ प्लीज. वेरी गुड, वेरी गुड. कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. ट्रूनेट क्या है? दैट इज द इंडियन वर्जन ऑफ सीबीनेट. हमारे इंडिया ने एक मशीन डिस्कवर कर ली है जो बहुत सस्ती है और पोर्टेबल है और उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं. सीबीनेट की मशीन को हर जगह नहीं ले जा सकते. दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रूनेट. तो अब ट्रूनेट तो बहुत ईजिली अवेलेबल हो गया क्योंकि इंडियन ओरिजिन का है ये टेस्ट ट्रूनेट. दैट्स वाई दिस इज ट्रूनेट. What are the targets by the government? Our current rate of डॉक्टर भावतोष सर, मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको मतलब बताना चाह रहा हूँ. द करंट रेट ऑफ, आपको पता ही है इस बारे में, करंट रेट ऑफ एनुअल डिक्लाइन इज 3%, बट रिक्वायर्ड रेट इज 15%. अगर इतना हमारा रेट हो जाता है एनुअल डिक्लाइन का, देन वी कैन अचीव आवर टारगेट बाय 2025. सो नेशनल जो प्लान है 2000 अप टू 2025, दे आर सेइंग you have to detect the case, you have to treat the case, you have to prevent the disease, and you have to build the support system. Find all TB cases with the involvement of the private sector. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट तो इसमें होगा तभी ये सब ठीक होगा. दिस इज द स्टेटमेंट बाय अवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. She urges citizens to work collectively towards the TB elimination in the spirit of Jan Bhagidari on a war footing. When a welfare scheme is made in the interest of people, its chances of success increase manifold. Our health minister reiterates need for Jan Andolan to eliminate tuberculosis by 2025, 5 years ahead of global target. And TB Mukt Bharat Abhiyan is an extension of Honorable Prime Minister vision and citizen-centered policies. Now comes the involvement of the private sector. How we can help the government? अब भावतोष सर बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि इन लोगों से मुझे क्या मांगना है. अब सर के काम की बात आ गई है. सो इंडिया नोटिफाइड, सर ये जो फिगर्स हैं आई हैव टेकन फ्रॉम द WHO साइट. India notified 1.9 million TB cases in 2016, of which 1.6 million were from public sector and 0.3 million from the private sector. See our involvement in the management of tuberculosis. So staggering 1 million TB cases are missing from notification. 1 million इधर उधर घूम रहे हैं. अब वो या तो गवर्नमेंट सेक्टर के पास हैं या प्राइवेट सेक्टर के पास हैं. गवर्नमेंट सेक्टर के पास तो ऑफ कोर्स चांसेस कम ही हैं क्योंकि वो तो ज़्यादातर नोटिफाई कर रहे हैं, बट प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स का अभी इसमें थोड़ा कम है. मुझे लगता है सहयोग और ज़्यादा होना चाहिए. दैट्स वाई द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी वेरी वाइटल. व्हाट कैन वी डू? वी कैन पॉजिटिवली कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. सर आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं ना ट्यूबरक्लोसिस के, उसमें हम लोगों को आपको शामिल करना चाहिए सर. मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा सर. And positively participate in public-private mix-up for TB care and control of TB initiatives. Get updated with the latest knowledge of TB diagnosis. एक मैं दीपाली जी से अभी सर CME के बारे में बात कर रहा था कि अगर हमको 2025 तक TB elimination करना है तो we have to be updated with the tuberculosis management also. कि कौन सा टेस्ट हमें कब कराना है, कब नहीं कराना है सर. सर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है इसमें. लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि कौन सा टेस्ट कब कराना है, कब नहीं कराना है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू बी मतलब वेरी मच अवेयर अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस, हाउ टू मैनेज अ पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. बिकॉज ये जितना सिंपल लगता है ना सर उतना है नहीं. इट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. तो ये जो सिंपल केस MDR में कन्वर्ट होते हैं इसीलिए होते हैं सर.
यहाँ पे डायग्नोसिस मतलब इम्पॉर्टेंट दिस थिंग टू मेक द अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ टू बी डन बाय द repeated CMEs with the government and with the private agencies. Motivate and help patients to seek the right care and complete the therapy as needed. Proactively be part of policy shaping initiatives, be contributor in TB policy. And encourage and motivate fellow practitioners in achieving the TB Bharat Mukt Abhiyan. India has the expertise and necessary tools to effectively address the TB challenge. Thank you very much. TB हारेगा देश जीतेगा. Thank you very much. I invite all the chairpersons, please come on the desk. आ जाओ आप सवाल जवाब तो पूछेंगे तुमसे. डॉक्टर राजीव गर्ग आ जाओ. डॉक्टर भावदोष सर प्लीज कम. प्लीज सर. आइए सर प्लीज. नहीं आइए सर आइए. आइए आपको बोलना तो पड़ेगा ना सर. हाँ. Any questions from the audience? We have expert chairpersons, pediatrician, gynecologist, and a physician. Any questions from the media, from doctors? Yes, please. हाँ मैंने इसलिए छोड़ा था कि डॉक्टर राजीव गर्ग से मुझे पूछना था. हाँ मैंने जानबूझ के इसलिए ही छोड़ा था. हाँ मैंने जानबूझ के छोड़ा था वो कि डॉक्टर राजीव गर्ग से मुझे ये बात करनी थी. अभी कुछ सवाल जवाब रह गए हैं जो पूछेंगे उसमें काफ़ी आंसर आ जाएंगे. हाँ तो डॉक्टर राजीव गर्ग अभी डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं हाउ टू मैनेज ए पेशेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन द पीडियाट्रिक एज ग्रुप. एक्चुअली यू कैन शो द स्लाइड सर. तो मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ. In pediatric cases, the suspicion, doubt should be very high because clinically they don't present very fluidly. They usually present with an extrapulmonary form. So the doubt should be very high. We have to first doubt it, then confirm it, and then treat it. So mota mota ye hai. It is there. अरे स्लाइड बंद कर दिया तुमने. मोनू तुझे भागने की जल्दी है. नहीं सर मैं तो इसका तेरा लैपटॉप यहीं रख लूंगा परमानेंट. तो अगर आपको डाउट है एनी फीवर फॉर मोर देन 2 वीक्स, एनी कफ फॉर मोर देन 2 वीक्स, एंड इफ यू कैन हैव ए स्पूटम देन गो फॉर जीन एक्सपर्ट टाइप ऑफ टेस्ट. एंड बिकॉज इसमें स्मीयर पॉजिटिविटी के चांसेस थोड़े से वो हो जाते हैं. तो गो फॉर CB नेट and if the microbacterium is detected, it is a clear cut case. The problems comes where we're not able to get the specimen. चाहे इंड्यूस करा के भी करते हैं चाहे वो स्पेसिमेन नहीं हो पाता. तो then we have got indirectly we can go for X-ray and tubercular skin testing. And if there is a suggestion from the X-ray or the skin testing and clinically you doubt कि हाँ ये लग रहा है तो it's better to treat. क्यों sir? It's okay with that? I think there is a role of gastric aspirate also in the management of. Sir, but sometimes you are not able to get it. Though they are doing CB net in stool. Now they are doing CB net in stool. Sometimes you are not able to induce the vomiting. You can send the sample of gastric aspirate also for the CB net. That is the important thing. Gastric aspirate can be sent for the CB net if you are in the doubt and the patient is not having sputum. No, but they are sending it in the stool also now. Yeah. नहीं जीन एक्सपर्ट के जो है ये जो पैथ काइंड वाले हैं they are doing it. But it is not. Dr. Rajiv, actually by WHO guidelines it is not recommended. They are recommending only the gastric aspirate. Okay, I will check from them. They have come with that. Dr. Minu is I think right. Urine, blood and stool. Not to be sent for CB net. Yes, madam. Post-COVID TB. Madam, actually,
it has been seen during the COVID time, the incidence of the tuberculosis was decreased dramatically. Decreased. And nowadays, there is a slight increase in the patients of tuberculosis after the COVID. Slight increase, not so much, which we are suspecting that there may be the high incidence of tuberculosis in the post-COVID era. But ऐसा नहीं है मैडम, अभी तो कमी है, इतना ज़्यादा तो नहीं है. नहीं मैडम, यू हैव टू कन्फर्म द डायग्नोसिस. एमडीआर का तो क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है मैडम. व्हेन यू आर हैविंग ए रेसिस्टेंस विद रेफेम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड, then you label the patient as MDR tuberculosis. And to make the diagnosis of MDR tuberculosis, you have to use the CBNet or liquid culture or line probe assays. Even in These government, three tests. even in government now CBNet is must for all positive case. They are doing for everybody. मैंने अभी आपको बताया था, WHO has clearly told when you are dealing with a patient of tuberculosis, then you have to go for the CBNet. Because in our country, the initial INH resistance is very very high. अगर आप करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने INH रेसिस्टेंस है या नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि CBNet कराना है. Doubt which we face, that we usually give BCG vaccination to every child. So how to interpret Monto's test or skin test in that? मैंने आपको बताया था इसके बारे में. मुझे लगता है कि इफ़ द पेशेंट इज़ BCG वैक्सीनेटेड, मैं आपको दिखा दूँ स्लाइड्स को, किस कैसे कैसे क्राइटेरिया है उसका. मैं आपको बताता हूँ. यस यस. Around 40 years. 40 years. ये तो 30 to 40 इयर्स तक चलता है. तभी मैंने बोला कि जो इग्रा है, गामा इंटरफेरॉन, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय BCG वैक्सीनेशन. हमारे देश में 40 साल के बाद तो मॉन्टुक्स का बहुत अच्छा रोल है, बट उसके पहले तो गामा इंटरफेरॉन का ज़्यादा अच्छा रोल है, बिकॉज इट इज़ मोर स्पेसिफिक देन मॉन्टुक्स. डॉक्टर आशीष, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे. इन आवर प्रैक्टिकल मैनेजमेंट, many time, most of the time that we have been keeping Monto's test as positive after 10 millimeter of size. But in BCG vaccination children who have a good mark over there, we take it as 15 millimeter as a cut line. But most important thing we consider is as the clinical correlation कितना है. That is the most important thing. बिल्कुल ठीक बात है सर. और आई थिंक द क्लिनिकल जजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें ना क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि व्हेन यू टेक द मेजरमेंट ऑफ 5 मिलीमीटर, व्हेन यू टेक द 10 मिलीमीटर एंड व्हेन यू टेक द 15 मिलीमीटर. 5 मिलीमीटर का कब है? व्हेन द पेशेंट इज HIV पॉजिटिव, you have a recent contact with the active tuberculosis patient, nodular or fibrotic changes on the chest X-ray, and when you are dealing with the patient of organ transplant, then 5 millimeter is the criteria. When 10 millimeter, recent arrivals from the high prevalence countries, हमारे देश में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. IV drug abusers, resident or employee of high risk congregate settings, hospital workers or the lab persons, comorbid conditions, children less than 4 years of age, जो आपने अभी पूछा, and infants, children and adolescents exposed to high risk individuals. More than 15 millimeter, जब कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है तब भी 15 मिलीमीटर. और एक भी है मॉन्टुक्स में, अगर मॉन्टुक्स में अरिदमा और इंड्यूरेशन होता है, इंड्यूरेशन को आपको मेज़र करना है. अगर इंड्यूरेशन के साथ साथ वहाँ पे नेक्रोसिस हो गया, दैट मीन्स यू आर डीलिंग विद द पेशेंट ऑफ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस. अगर वहाँ पे नेक्रोसिस भी हो रहा है तब फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो यू आर डीलिंग विद द पेशेंट ऑफ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस. अरे डॉक्टर राजीव बता दीजिए प्लीज. आई थिंक उसकी जो प्रिपरेशन है, इट्स 5 TU and 0.1 ml. Let me just clarify this thing. According to IAP or guidelines, what they say is we needed 2 TU. The guidelines is for 2 TU. But in labs, most of the time what we get is 10 TU or 5 TU. So now you have to really make your judgment कि आप 5 TU से 10 मीटर में आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव है कि नहीं. 2 TU, the guidelines are for 2 TU.
but available is 5 TU or सर 10 TU. ये तो बेसिकली इफ द पेशेंट इज नॉट एक्सपोज्ड, नो रिस्क फैक्टर, देन 2 TU. You really have to use your brains, is it positive or negative? And sometimes this PPT is also not available. They do a BCG test. Suppose that is also is helpful. I have read some article where they PPT is not available, so they put the BCG in the same, just like a. No. Like suppose you are suspect. Yes, can be done. Very that correct. is positive, then it is taken as a tuberculosis skin test only. But क्योंकि PPT I think only one country, still India only manufactures it. यार कोई यूरोपियन कंट्री मैन्युफैक्चर करती है. The protection rate by the BCG vaccination, it varies from 0% to 80%. 0% to 80%. कुछ नहीं पता कि BCG से प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अभी मैं लेटेस्ट एक आर्टिकल देख रहा था, दे आर ट्राइंग टू डेवलप द वैक्सीन फॉर द ट्यूबरक्लोसिस सर. दे आर ट्राइंग टू डेवलप द वैक्सीन फॉर द ट्यूबरक्लोसिस. अब उसमें बिगेस्ट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि जो होस्ट इफेक्ट है, रिस्पॉन्स है आफ्टर द वैक्सीनेशन, दैट इज़ टोटली डिफरेंट. हम लोगों में क्या होता है, कुछ लोग एक्टिव डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ लेटेंट में होते हैं. तो ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है. इट इज़ अ बिग चैलेंज इन डेवलपिंग द वैक्सीन फॉर द ट्यूबरक्लोसिस. But most probably the Glaxo is working on the vaccination for tuberculosis. Within 1 or 2 years it will come. डॉक्टर आशीष, मैं ऐड करना चाहूँगा. आपने कहा प्रोटेक्शन 0 to 80%. That is true. So this discussion goes on for long time, but ultimately dictum comes out that it may not prevent the disease, but it will definitely prevent the severe disease. Severe disease. Like miliary disease, Sir, tuberculosis. वो तो ये है कि प्रोटेक्शन 80% भी तो है. हाँ. तो ना लगाने से अच्छा है कि लगाई जाए. Yes. ये है. बट कुछ कंट्रीज़ में नहीं लगाते वो. दे आर नॉट फॉलोइंग दिस BCG वैक्सीनेशन. बहुत जगह नहीं लगाते सर. सर What about mother's milk to be given to the child? When she has active disease? मैडम, आइडियली द चिल्ड्रन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मदर ड्यूरिंग द एक्टिव डिसीज. हाँ, नहीं ब्रेस्ट मिल्क तो ये डॉक्टर वाणी आई थिंक या वो तो दे सकते हैं. Ma'am, the basic thing is the infection is, transmitted by the droplet infection. By the means of droplet. So we can separate the infant, we can educate the mother to wash her hands nicely and then express the milk, and the expressed milk can be given to the infant in a country like India, because yes ma'am, we can definitely give the expressed milk. See, this is true about the active disease. If the already mother is taking ATT, already 2 or 3 months have passed. So we can give. We the can breast give milk, breast milk by breastfeeding directly. can be given. सेपरेशन के भी जरूरत नहीं है. Yes. सर ATT के बारे में है, ATT के बारे में आपको बताता हूँ. इफ़ यू आर यूजिंग ATT इन द प्रॉपर डोज, अगर प्रॉपर डोज में आप दे रहे हो ना सर, तो विद इन 2 to 3 weeks द पेशेंट विल बिकम स्पूटम नेगेटिव, नॉन इन्फेक्शियस टू अदर्स. बस ढंग से देने की ज़रूरत है सर. सर कोई यूज़ नहीं है सर, ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है. हाँ, आई इनवाइट डॉक्टर भावतोष सर, प्लीज़ से फ्यू वर्ड्स. सर आप वहीं से बोलिए सर, बैठ के बोलिए सर. डाइस पर IMA के पदाधिकारीगण और इस हॉल में उपस्थित सभी IMA के मेंबर्स, कोलीग्स और मेरे विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आशीष को आज के बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए बधाई दूंगा. सर कॉलेज के बाद हमने इतनी सीरियसली पहली बार सुना होगा. वो भी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में. तो मैं कहा तालियां जरा जोर से बजाइए, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए. मैं अभी डॉक्टर साहब ने डाटाज दिखाए थे कि वर्ल्ड में क्या पोजीशन है. इंडिया में हम सबसे ज़्यादा हैं, यूपी उसमें भी पूरे इंडिया में ज़्यादा नंबर्स हैं, और सबसे वजह की बात है गाज़ियाबाद, उसमें भी नंबर 1 है.
इस समय हम 9,553 मरीज़ हैं जो हमारे ऑन ट्रीटमेंट हैं, ये वो हैं जो नोटिफाइड हैं। बट एक अच्छी बात है, अभी मैं ग्लोबल डाटा देख रहा था कि 1.6 मिलियन अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, 0.3 प्राइवेट सेक्टर का नोटिफिकेशन है, बट गाज़ियाबाद में ये नोटिफिकेशन 40% से ज़्यादा है। हाँ, नहीं, ये बेसिकली आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है। और यहाँ पे बात डॉक्टर साहब कर रहे थे कि प्राइवेट नोटिफिकेशन की, ये अकेली ऐसी डिजीज़ है जहाँ प्राइवेट नोटिफिकेशन है, जहाँ जन भागीदारी चाहिए, एक एक व्यक्ति की भागीदारी चाहिए, सामाजिक भागीदारी चाहिए। हमको कुछ पेशेंट को गोद लेना है, कुछ को भावनात्मक सपोर्ट देना है, कुछ को पोषण का सपोर्ट देना है, और उनके घर के फैमिली मेम्बर्स को भी एजुकेट करना है जिसके घर में टीबी का पेशेंट। और ये माइग्रेटरी पॉपुलेशन का शहर है, तो बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं। बट मैं एक डाटा आपको और शेयर करना चाहता हूँ, यह तकरीबन 1000 से 1200 मरीज प्रत्येक माह जुड़ जाते हैं और पुराने ठीक हो जाते हैं। और इनमें से जो ताज्जुब की बात है, उस पर ध्यान देने की चीज़ है, मैं देख रहा था 400 से अधिक पेशेंट दिल्ली में डायग्नोस होते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अजीब होता है। वो रहने वाले गाज़ियाबाद के हैं और 40% 30 to 40% के आसपास हम दूसरे जगह से डायग्नोस कराते हैं। इसका मतलब या तो हम मिस करते हैं या उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर नहीं है, दोनों में से एक बात है। मैं दूसरी बात डॉक्टर से बता रहा कि टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे। गवर्नमेंट सेक्टर में सभी टेस्ट उपलब्ध हैं। जहाँ कोविड की वजह से मैं बहुत परेशानी हुई, वहीं हमको ट्रू नेट और सीवी नेट बहुत ज़्यादा मिला, तो बड़ा इजीली एक्सेसिबल है। हमारे पास अभी थोड़ी सी किट्स की कमी है, बट ये मैं बता रहा हूँ, किसी भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को, किसी को भी अगर कोई भी टेस्ट कराना हो तो हमारे यहाँ निःशुल्क उपलब्ध है। आपका पेशेंट आपको वापस, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन आप तक दिलवा देंगे, पर प्लीज़ नोटिफाई ज़रूर कीजिए। एक एक पेशेंट को नोटिफाई करें। अगर हम पेशेंट को नोटिफाई करेंगे तो जल्दी ही टीवी पे भी जाएगा। हमने इसी वजह से बता रहे हैं, जब से मैंने शुरू किया था, प्रधानमंत्री जी UN का WHO का मिशन है कि 2030 में टीबी फ्री। प्रधानमंत्री का विज़न है कि 2025 में विजन में। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर IMA गाज़ियाबाद ठीक तरीके से काम करें तो हम इसे क्यों नहीं 24 में फ्री कर सकते। तो बिल्कुल, और मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि और भी CME करें, इसको मंथली CMEs करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, ये जब लोगों को पता लगेगा तो बहुत सारे लोग जुड़ने लगेंगे। हम प्राइवेट सेक्टर्स के लोग भी, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी हम भेज देंगे, एक CME रखवाएंगे। डॉक्टर साहब आशीष जी का उसमें लेक्चर रखेंगे, तो उनको भी मैसेज जाना चाहिए। बहुत सारी क्वेरीज मेरी भी बहुत क्लियर हुई हैं इसमें से। जितने लेक्चर्स बढ़ेंगे, जितनी हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, उतनी तेज़ी से हम टीवी पर कंट्रोल कर सकेंगे। हमारा जो विज़न रहेगा वो ये रहेगा कि हम पंचायत लेवल, गांव लेवल से टीवी को फ्री करें। लास्ट ईयर हमने कलचीना गांव को काम किया था, जहां पर 91 पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस के थे। हमने एक्सटेंसिवली वहां पर सैम्पलिंग की, मोर देन 2600, और उसके बाद टीबी हैज़ ड्रॉप डाउन बाय 26 पेशेंट। वेरी गुड। तो मेरा आप सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा कि आप कम से कम अपनी OPD का 5 से 10% पेशेंट को जरूर टीबी की दृष्टिकोण से देखें कि उनमें उनको टेस्ट कराएं, एक्सक्लूड कराएं। ये स्क्रीनिंग होता रहेगा। आज भी एक स्क्रीनिंग कैंप था यशोदा हॉस्पिटल में, कौसाम्बी में। तो जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, करीब स्क्रीनिंग कैंप ही लगा दिए महीने में एक बार। तो बहुत सारे टीबी के स्क्रीन कर लेंगे। अगर वो हमारे सिस्टम में आ जाएंगे तो ट्रीट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Now invite our NGOs is also here. Please come. You want to say something? Please. Good evening, everyone. And mic de dijiye. Sir, good evening and welcome, sir. And thank you for giving me the opportunity to express something about TB. Sir, जैसे सर ने बताया कि वो ऑलरेडी गाजियाबाद बहुत अच्छा काम कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में। हमें PPS से एक एजेंसी चूज़ किया गया है, HLF PPT को, हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग को,
कि जो केसेस आप लोगों के यहाँ डाउट्स है कि सैंपल कहाँ टेस्ट होना है या सैंपल भेजना किसको है, तो पीपीएससी एजेंसी का मेन काम है पेशेंट प्रोवाइडर सपोर्ट एजेंसी। आपका जो भी केस नोटिफाई होगा, आपकी एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको डायग्नोज कीजिए सर, हम आपके पेशेंट का घर से सैंपल कलेक्ट कराएंगे और गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी टेस्टिंग होगी और वो रिपोर्ट्स भी फिजिकली भी हम अवेलेबल कराएंगे। और हमारा एक निक्षय पोर्टल है जिस पे नोटिफिकेशन होता है, उस पे वो ऑटोमेटिकली अपडेट भी होती है रिपोर्ट। पहला फैक्टर तो है कि हम क्लिनिकली भी आप कर रहे हैं और माइक्रोबायोलॉजिकली भी वो केस कंफर्मेशन में आ जाएगा सर। सेकेंडरी जो सर ने बताया डायबिटीज़ मेलिटस और एचआईवी, वो भी हर टीबी पेशेंट का करना मैंडेटरी है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम उसकी एचआईवी और डायबिटीज़ मेलिटस की रिपोर्ट भी उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट कर देते हैं पेशेंट के, तो उसका क्रिटिकल कितना हो सकता है, मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो सकता है, तो वो सारे पैरामीटर्स निक्षय पे हम लोग अपडेट करते हैं। अगर आप वो रिपोर्टिंग हमें मतलब परमिशंस पेशेंट का, आप सिर्फ हमें नोटिफाई करने के लिए पेशेंट्स की सर मोबाइल नंबर आपके यहाँ कोई हो या एक एड्रेस का हो, हम पेशेंट की रीच घर तक करेंगे। एड्रेस को भी फॉलो करेंगे कि पेशेंट दवाइयाँ ले रहा है या नहीं। समटाइम्स हमने अपनी स्टडी में पाया कि एक ही प्रिस्क्रिप्शन से वो दवाइयाँ लेता रहता है मैडम 6 महीने तक, कि मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं, इन्हीं दवाइयों को कंटिन्यू करता हूं। तो वो एड्रेस को भी हम फॉलोअप करेंगे और जियो टैगिंग वगैरह भी करेंगे। तो हम एक एज ए एनजीओ पीपीएससी एजेंसी गाजियाबाद में एचएलएफ पीपीटी हमारी बहुत अच्छी टीम है लंबी, और मैडम ने सब जगह इंट्रोड्यूस भी किया, और हम अपने सभी प्रोवाइडर्स के पास जा रहे हैं सर इंडिविजुअली कि हम वहाँ फैलोकियन ट्यूब्स वहीं पर अवेलेबल करा दें पेशेंट्स के लिए, और अगर कोई नहीं चाहता तो हम उसको घर से भी सैंपल पिकअप कर सकते हैं सर उस चीज़ का। तो ये हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं अपने एंड से। सर वो नंबर अभी डिस्प्ले नंबर आप सारे ग्रुप पे शेयर कर थैंक यू लीजिए, सर, है ना, सारे ग्रुप्स पे डाल दीजिए। राइट राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स डॉक्टर संदीप टू ऑर्गेनाइज दिस इम्पॉर्टेंट मीटिंग। और आपने देखा 1 घंटे तक लोगों ने पिन ड्रॉप साइलेंस के संग डॉक्टर आशीष को सुना और इतनी सारी क्वेरी थी, हम लोगों मुझे भी कई सारी नई चीज़ें पता लगी। इट वाज अ वेरी वेल प्रिपेयर्ड presentation, and I thanks our UP members also, because this is a hybrid meeting. We are here, but many members have joined from all over UP, and they are also listening with curiosity. We have not kept a question answer session for them. Next time we will keep like that also. Thanks everybody for joining, and I will request everybody to stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। एक चाय के लिए इनवाइट करने से पहले एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा जो लोग यहाँ पे हैं, और हमारे डॉक्टर आशीष का फेलिसिटेशन रह गया है। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र एंड डॉक्टर प्रीति से कहूँगा एंड डॉक्टर सीमा से कि डॉक्टर आशीष को फेलिसिटेट करें, और सभी लोग सर का तो आती कर दिया हमने। I will request Chandan from IMA UP State Office just to आइए सर, और stop the meeting, online meeting, because formal meeting is over now. आप सभी लोग जितने हैं वो एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आ जाएं। ठीक है, अच्छा हाँ यहाँ आ जाते हैं, मैं आ जाता हूँ।